ओके ओके ओके। अब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग गुड? ठीक है। ओके 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 ओके। सो let us start today's lecture. Sorry for the delay, and my application was getting crash all the time, so that was the problem. ठीक है। Okay, guys, today on some 4 to 5 topics I have made my handwritten notes. The reason for this is that you can have an idea how to prepare notes. ठीक है, एक बड़े से कंटेंट को छोटा कैसे किया जाता है, ठीक है? Because if it is perfect to the point, then it will help you in revision. ठीक है? So learn how you can write down some important news. Okay? So let's start today's lecture by one of the most famous act, which is called Armed Force Special Powers Act. Now see, these are my notes. Now I have made these notes in such a way that all the required detail information वो मुझे पता है, ठीक है? Now what is that? That Armed Force Special Powers Act was enacted in 1958. Now, the source of this act was from a British era law that was enacted in 1942 during Quit India movement. Quit India movement पता है ना? 8th August, August क्रांति, गोवालिया टैंक मैदान, ठीक है? So, to curb those movements and those activities, British India, they implemented this law. From taking inspiration from those laws, ये law डाला गया है. पता चला? Am I clear? कौन लेके आया है ये? It was introduced by G.B. Pant, who was Minister of Home Affairs back in the time. जब ये 1958 में लाया गया था, तब इसका नाम क्या था? आर्म फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958. नाउ व्हाई आसाम एंड मणिपुर? यार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है? ये शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि हमें ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े. ये नोट्स है, ठीक है? अंडरस्टैंड, दीज आर नोट्स, ठीक है? सो बैक इन द 1958 नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 ही स्टेट थे, एक आसाम था और एक मणिपुर था. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज आसाम मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है? देन इन 1972 गवर्नमेंट अमेंडेड दिस पर्टिकुलर एक्ट टू इंक्लूड वन प्रोविजन ऑफ डिस्टर्ब एरिया. डिस्टर्ब एरिया कहां पे डिफाइन किया गया है दादा? डिस्टर्ब एरियाज आर दोज एरियाज which has tendency of riots, ठीक है? जहां पे राइट्स होने की संभावनाएं है, वहां पे गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर एरिया एज डिस्टर्ब एरिया यूजिंग सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट फॉर द अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड जो डिस्टर्ब एरिया है वो कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOFHA. और जो आसाम और मणिपुर के अंदर डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करता है यूजिंग सेक्शन 3? द आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? इट वॉज रिवोक मतलब निकाल दिया गया था फ्रॉम त्रिपुरा इन 2015 एंड फ्रॉम मेघालय in 2018, ठीक है? Now this act is a very controversial act. Why?
Because once a region is declared as a disturbed area, then in that region, Indian Army or any of the Central Armed Police Force (CAPF), they can make arrest without warrant. They can make searches, conduct raids, conduct searches without warrant. They can even detain a person and they can even fire if there are some kind of circumstances. Okay? So this law has been considered as a violator of fundamental rights of the people where it is implemented. So in 2004, Jeevan Reddy Committee was constituted to review this act, and they suggested that this should be repealed and instead an act which is called UAPA, Unlawful Activities Prevention Act 1967 should be used rather than AFSPA. Then again, second ARC. ARC stands for Administrative Reform Commission. They also advise the same thing to the government that we should repeal this act because it violates human rights of the people, and instead we can use other existing provisions to implement this law. Am I clear? Now let anyone ask anything for this particular topic. You will able to answer it. You can ask me the question कि सर हमने 2 महीने पहले पढ़ा था वापस क्यों पढ़ रहे हैं? Because recently the government of Assam, क्या मैंने कहा government of Assam, they extended the implementation of AFSPA in Assam for 6 months. हर 6 महीने के बाद एक रिव्यू किया जाता है कि ये लॉ की हमें जरूरत है या नहीं है. ठीक है. आसाम में 1980 से रिव्यू चल रहे हैं हर 6 महीने, और हर 6 महीने के बाद ये लॉ एक्सटेंड किया जाता है. बेसिकली आसाम इज ऑन द 42nd ईयर ऑफ और अंडर दिस लॉ. अंडरस्टूड? क्लियर? लिख लो. Now you can answer any question from Aska, ठीक है? Because असली मिर्च मसाला यही है. So this is how you should prepare your notes. (1950) के बाद मैंने ये लिखा है derived from 1942 British India legislation. Please write down फटाफट so that we can go ahead. Swayam, it is up to you what suits your taste. If you are comfortable with electronics notes, why not? If you are comfortable with physical notes, why not? सेकंड लाइन में मैंने जीडी पंत लिखा है. जीडी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गाइस. अभी हाल ही में उनकी डेथ एनिवर्सरी गई है, आई गेस 1 हफ्ते पहले. ठीक है. So he was the home minister when the government implemented this particular act. Okay, everybody, let us go ahead then. Okay, सबका हो गया? See guys, let me tell you this one thing about current affairs and general knowledge. It is a very wide term, general knowledge and current affairs. They can ask you anything, ठीक है? So जितना पढ़ सकते हो अच्छा है, but पागल होने की जरूरत नहीं है. You have to do other subjects, you have to do other modules, you have to do your math, logical reasoning, English. Okay, so don't go crazy after reading current affairs and general knowledge. Okay, you should know important topics. Okay, and you should do it.
Now anybody who is asking me the full form of ASPA, why do you want to waste time? ठीक है, लाइक उतना आप खुद कर सकते हो गूगल करके, ठीक है, वरना अगर ऐसा होता तो मैं वो पूरा कॉपी पेस्ट करके ही लाता गाइस, ठीक है. दिस थिंग्स आई डू टू मेक योर जॉब इजी. नाउ इफ यू आस्क मी हर एक चीज का फुल फॉर्म, तो मैं वो बड़ी बड़ी पीपीटी सी बना के लाता था. ओके, सो बी रीजनेबल. अगर आप आस्पा 18 गूगल भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. वी शुड सेव टाइम सो वी कैन लर्न मोर थिंग्स. Okay, let's go ahead now. Okay, United Nations General Assembly. Now see, all the important things related to UNGA मैंने यहाँ पे लिख लिया है. Now let us understand the context why we are studying about General Assembly, because there was recently a emergency special session. एक स्टार करके मैंने लिखा है, emergency special session, because of the Ukraine and Russia issue. Okay, so even in that particular assembly, India abstained from voting. India voting डालने नहीं आया, ठीक है. इंडिया के साथ टोटल कितनी कंट्रीज थी ऐसी? There were 35 countries who abstained from voting at United Nations General Assembly. Now the most important question is that total how many countries are represented at the United Nations General Assembly? The answer is 193 countries, and all of them have an equal vote, which is one vote. United Nations General Assembly is one of the 6 principal organization of United Nations. I guess 3-4 हफ्ते पहले मैंने आपको 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाए थे यूनाइटेड नेशंस के. आई होप यू रिमेंबर दैट. ओके, सो बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्रेटरी जनरल को सिलेक्ट करना, जैसे कि एंटोनियो गुटेरेस है, उनको सिलेक्ट करना. नाउ ही इज सिलेक्टेड आफ्टर recommendation from United Nations Security Council. पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड करती है, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, एंड तब जाके सेक्रेटरी जनरल बनते हैं. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉन परमानेंट? टोटल 10. नाउ दोस आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 193 कंट्रीज. तो वो कैसे होता है? अगेन by the United Nations General Assembly, and even the budget of the United Nations is passed by the United Nations General Assembly. Clear, guys? Up tak. Now, special sessions are called when the United Nations General Assembly is not in session, but there is some situation which needs to be deliberated. Then a special session is called by Secretary General using Chapter 4, Article 20 of the United Nations Charter. क्या यूज किया जाता है? Chapter 4, Article 20 of United Nations Charter. And उससे भी ऊपर one extraordinary emergency special session can be called. It is an unscheduled meeting of United Nations General Assembly within 24 hours. Can you understand the importance of this emergency special session? 24 घंटे में मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है. और ये कैसे बुलाई जा सकती है? By 7 members of United Nations Security Council, if they propose for an emergency special session, तो ये सेशन बुलाया जाता है. एंड इवन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी अगर मेजॉरिटी आती है आउट ऑफ 193, अगर आप मेजॉरिटी वोट करते हो फॉर इमरजेंसी स्पेशल सेशन, तब भी बुलाया जाता है. ये यूक्रेन वाला गिन के टोटल कितने इमरजेंसी स्पेशल सेशन हुए आज? द आंसर इज 11.
Clear? Any doubts? There is a difference between special session and there is a difference between emergency special session. So don't create a blunder. There are total from 1945 to 2022. There are only 11 emergency special sessions. Okay, write down. ये जो मैंने आपको इतना समझाया, see how I have written it down, and you can understand how it is easy to revise this particular piece of information. Representatives. It's me. Why are you calling? You need to go with my opinion. I don't feel right. I'm worried that there's something wrong. I'm sure everything's okay. You're probably just overreacting. Yes, Khyati, and the notes that you have made are good on that particular topic. Okay, it is perfect. You have covered it in a very comprehensive. Sorry, never seen it. ठीक है? हाँ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी है कहते हैं ऋषित, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव को भी मैं ऐसे लिखता हूँ. ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. ठीक है, ओके गाइस, लेट्स गो अहेड. एवरीबडी डन विद दिस? ओके, लेट्स गो. The IEA, the International Energy Agency. Now let us understand a little bit background why we are studying about this particular institution, because ये काफी चर्चा में है. Why? Because IEA is advising to the European nations to decrease and to cut off their supply of oil and gas from the Russians. पता चला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कह रहा है, दैट प्लीज स्टॉप बाइंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया. इवन यूएसए एंड कनाडा हैव बैन्ड द इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम रशिया. ठीक है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूज इन न्यूज. ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में. वेयर इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड आईईए का? इन पेरिस. It is an intergovernmental organization established by OECD, Organization for Economic Development, in 1974. Why? Because in 1973 there was an oil crisis. ठीक है? What is the job of this particular organization? To make sure that physical disruptions ना हो, energy is easily available, supply of oil is there, and information about the petroleum markets should be available. Presently, at this moment, there are 30 members, and India is also a member at IEA. Understood? You give up, we'll make sure she goes to the hospital when the baby comes. Get it? We should know that India is a member. We should know when and why it was established. And how many members are there right now? The answer is 30. लिख लो. Not leaving here without my kid. I'd say we're at a stalemate. What are you doing? Bought us a little time. They're coming through that door soon enough, and I'm not sure we can stop them. I think I know what happened. I had the TV on back at the house. Sports Center, Comlister. Heard that and
East Coast guy. I cannot get used to this desert. Okay, everybody, Sometimes use the showers, makeshift humid. चलेंगे आगे. You know there's a drought. Yes, sir. I'll stop doing भाई कल के दिन का कुछ इम्पोर्टेंस था कि नहीं? 12 मार्च का हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंस है कि नहीं? Yes, sir. His name is Henry. He's 18. क्या है? The biggest thing for देखिए kids आपका is lying. बेसिक नॉलेज कैसा है? Early age. I can forget. ठीक है, क्या हुआ था? But this डांडी मार्च. यस, I told my son something similar. विथ अ डंडा गांधी स्टार्टेड अ डांडी मार्च. ठीक है, After that, डायलॉग याद है ना? बॉडी बॉडी था नहीं लेकिन डेयरिंग बहुत था. ठीक है, वैसा वाला है ये केस. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. लगे रहो मुन्ना भाई का डांस. ठीक है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. लेट्स गो. No, my husband's here. What's happening? ओके, ध्यान से सुनना. ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, देयर आर 3 PPTs डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैं जो कह रहा हूँ ना पहले वो सुनना और बाद में लिखना. मैं अभी से कह रहा हूँ, जो मैं समझाऊंगा उसको सुनना और बाद में लिखना. ठीक है, ओके गाइस, डू ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? Because recently one of the very big controversy was there because of the reservation in the economically weaker section and with the OBC reservation in NEET undergraduate and postgraduate courses. NEET पता है ना क्या है? If you want to take admissions in the field of medical after your graduation or for undergraduation, you required to appear for NEET UG and NEET PG. You don't want to find out when you get Yes. in the hallway. So the story goes that there is 2 categories for any medical aspirant to take admission. One is state quota. Suppose BJ Medical College में हमारी जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे 50 सीटें हैं. ठीक है, Claire, so that particular seat is divided between state quota and all India quota. पता चला पहले क्या हुआ? सबसे पहले the seats are divided in states quota and all India quota. ये क्यों किया गया? how long is somebody To do away with this domicile thing. कि अगर civil hospital is one of the best, then somebody should from Karnataka, somebody from Bihar, somebody should from Northeast should also have a chance to study at civil hospital through all India quota. ठीक है, something like that. So basically in that particular all India quota there is reservation for scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, but recently government implemented the OBC quota and economically weaker section quota in that all India category. So there was a huge uproar about this particular move of the government and the matter went to the Supreme Court. ठीक है, so we should know few things, that what is economically weaker section, how they are decided that you are eligible for economically weaker section or not, what constitutional provisions are there for economically weaker section students. ठीक है, so let us see and let us understand. पहले ये समझते हैं. देखो, through the Constitution Amendment Act 103, 2 articles were introduced. One is Article 15 Clause 6, Article 16 Clause 6. Article 15 Clause 6 allowed reservation for the economically weaker section of the society in the general category up to 10%. ठीक है, in educational institution. Article 15(6) and by Article 16 Clause 6, economically weaker section in general category are allowed for reservation in government jobs. Am I clear? Article 15 Clause 6 deals with educational institution and other provisions, and Article 16 Clause 6 is dedicated for government jobs. Am I clear? I hope you don't have any trouble in this. लिख लो. You know? Yeah,
फिर आगे की स्टोरी आगे बताता हूँ, पहले इतना लिख। He's jamming our signals. Any idea how we fix that? Shut the power from the building. Jammer should go off. How do we turn off the power? Main circuit breaker's in the basement. I know this because I see it every time I'm doing my laundry. It's not gonna be easy to get to the basement. Only have 2 magazines left. Me too. And those are gonna go real quick if we get into trouble outside. क्या नहीं समझ आया पूछिए? Where? Why are you not going mobile? I cannot repeat things again and again. It's the basement. I speak very slowly and steadily so you can get it. What part you did not understand? अच्छा, clause वाला. Okay. So Article 15(6), Article 15 clause 6, it says that the state can make certain provisions for economically weaker section. ठीक है? Now this is referred with the educational institution. ठीक है? अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लेना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, सो इट कैन बी डन थ्रू आर्टिकल 50 क्लॉज 6. But suppose somebody wants a government job from an economically weaker section, then they have to go for the provisions are made under Article 16 clause 6. ठीक है? Now I will urge all of you that you should read Article 15 clause 4, 5 and 6 after the lecture. 4, 5 क्या करता है? It enables the government to make reservation for OBC, scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है? Article 15 clause 4 and 5. In the same way, Article 16 clause 4 and 6, 4 and 5 allows for the reservation in government jobs for OBC, SC and SE. But Article 15 clause 6 and Article 16 clause 6 is for economically weaker section. Okay, everybody, don't get confused. This is an important topic. ठीक है? बेचारे मेरे दोस्त मजदूर के मजदूर रह गए. ठीक है? Because this process of recruiting doctors was stuck because the case was sub judice. So वो बेचारे इतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको बिकॉज उनके जूनियर्स ही नहीं आए. ठीक है? अगर जूनियर्स आते हैं तो आपका काम शिफ्ट हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त वो सीनियर हो गए लेकिन उनको काम जूनियर्स के ही करने पड़े फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. तो बहुत सारी स्ट्राइक्स की थी, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन इट वाज अ बिग इशू. ठीक है? चलो. Now how it is decided that you are economically weaker section, you are from economically weaker section? The answer is government कहती है, central government कहती है that family income, the word is family income, should be less than 8 lakh per annum. खेती बाड़ी जमीन, agricultural land should be less than 5 acre. Residential flat है तो वो 1000 स्क्वायर फुट से छोटा होना चाहिए, और अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है तो वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए. देख लो, पढ़ लो, फिर मुझे बोलो, आगे चलेंगे. Don't take these things in a light manner, especially the students who are preparing for CLAT. ठीक है? आपको तो पता है आपके साथ क्या होता है. ठीक है? 6 क्वेश्चंस देने पड़ते हैं एक आर्टिकल को पढ़ के. आर्टिकल में यही चीजें लिखी जाती है. ठीक है? Everybody, हो गया? चले आगे. ठीक, चलो. Everybody, don't tell me in the last ये दिखाओ वो दिखाओ सर. ठीक है? चलो आगे चलेंगे. Okay, so now this is the story. You can just read through it. कुछ भी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं. ठीक है? Help me take off his vest. कुछ वो मेरे को नहीं पता है यार, मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना हूँ. 1 बीघा 2 बीघा 100 एकड़ मेरे को भी आज तक पता नहीं चला यार. वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. ठीक है? Let our father deal in such things यार. ठीक है?
1 बीघा 2 बीघा काहे का बीघा काहे का एकड़, ठीक है. Simply, please go through it. All India quota was introduced in 1986. Kush, I have no idea with respect to government institutions when it comes to all these things. ठीक है. मैं गवर्नमेंट बिल्डिंग देख के मैं घबरा जाता हूँ. ठीक है. हाँ सब चलता है यार इंडिया में. यू कैन टेक एनी सर्टिफिकेट. ठीक है. अरे यार बहुत बुलाओ मत यार मेरे को यार यहाँ पे. ठीक है. प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. मैंने बोला ना. जस्ट गो थ्रू इट गाइस. Now any question from this you will be able to solve it. Please read article 15 clause 4, 5 and 6. And when I give you some kind of job, please do it sincerely. It is for your own good. मुझे आते हैं by heart, लेकिन आपको पता होने चाहिए that what is the difference between article 4, 5 and 6. ठीक है. Okay guys, should I go ahead? चले आगे. Everybody. Okay, let's go. Factual news है. 53rd anniversary of CISF raising day. CISF stands for Central Industrial Security Force. What is their job? Their job is to provide protection and guard the sensitive installation of the government and other important facilities. Guys, anything which is of extremely important from national perspective, that particular institution is guarded by CISF. For an example, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इज डन बाय CISF के जवान. एम आई क्लियर? मुंद्रा पोर्ट जाओ, कंडला पोर्ट जाओ, आप कोई एटॉमिक पावर स्टेशन पे जाओ, आप इसरो पे जाओ, एग्जैक्टली all of those people are from CISF. It was established in 1969 after an act was passed by the Parliament of India. ठीक है. लेकिन कुछ नहीं किया लोगों ने. ठीक है. ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ. ठीक है. चलो. It is one of the 6 paramilitary forces in India. Guys, please remember, I have already covered this, that which are 6 paramilitary forces under Ministry of Home Affairs. I hope you remember that. Already मैं करवा चुका हूँ. ठीक है. So eventually it was made as an armed force of the Republic of India by another act of Parliament in 1983. Okay, लिख लो. और कौन है सबसे होशियार बच्चा जो मुझे CISF का मोटो बताएगा? CISF का मोटो कौन बताएगा मुझे? संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी. यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. फटाफट. ठीक है, लिख लो. एथोस, एथिक्स एंड वैल्यू नहीं है भाई. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. We studied about one paramilitary force which was established by the British during World War II. आज हम उसको कौन से नाम से बुलाते हैं? ये जब मैंने आपको 6 पैरामिलिट्री पढ़वाई थी तब मैंने बताया था, लेकिन आप भूल गए हो. विधान को छोड़ के, खुशी को छोड़ के. द आंसर इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. मैंने बताया था that it was constituted during World War II
and in those days it was called as Crown's Police. I hope you guys remember and recall. Okay guys, चले आके चलो भाई डांडी मार्च मैंने बोला ना डेरिंग डेरिंग था नहीं लेकिन सॉरी बॉडी बॉडी था नहीं लेकिन डेरिंग बहुत था ठीक है सो ऑन 12th March 1930 Gandhi ji started his historic Dandi march from Sabarmati ashram to Dandi ठीक है He started with 78 people to be precise. यहाँ पे 80 लिखा है लेकिन गलत है. It is 78 people and walked for 24 days to reach the coast of Dandi. And क्या बनाया भाई साहब ने नमक वो टाटा का नहीं बनाया था टाटा वाला बनाया ठीक है उस जमाने में कितने किलोमीटर चल के गए 390 किलोमीटर ठीक है अगर थोड़ा और आगे जाते तो दमन भी चले जाते यार ठीक है तो तुम डांडी पे ही क्यों रुकते हैं दमन चले जाते थोड़ा ठीक है चिल विल करके आते लेकिन चलो कोई बात ठीक है अभी उनके चक्कर में तो हमारा चिल बंद हो गया है ठीक है चलो लिख लो वो चिल नहीं वो एक्चुअली डायलॉग गांधी जी का है मैं ना खाता हूँ ना खाने दूंगा वो तब समझ लो उनका क्या था ठीक है गांधी जी का डायलॉग है ठीक है guys the most important thing to remember is that the civil disobedience movement was started by this particular march please remember this with the start of the Dandi march Gandhi ji started the civil disobedience movement on 12th March 1930 And I hope you guys remember the importance of 26th January 1930 because that day is considered as the first Independence Day, पूर्ण स्वराज डे ठीक है अभी मुझे बताना नहीं कि वो किसने बोला था ऐसा इन कोलकाता नहीं था पूर्ण स्वराज was in लाहौर ठीक है लाहौर सेशन ऑफ 1929 तब डिक्लेयर किया गया था दैट पूर्ण स्वराज इज द डिमांड ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस नाउ ठीक है लेकिन कुछ नहीं किया पिछले 100 साल में किसी ने ठीक है ऐसा मैं मानता हूं समझ गए ना आप लोग यस सरोजिनी नायडू इज अ वेरी फेमस नेम एसोसिएटेड विद Dandi March, ठीक है? So after Dandi March, another march was done at Dharasan Salt Works. Dharasan करके एक जगह थी, वहां पे सरोजिनी नायडू she took the lead, ठीक है? और गांधीलाल का बेटा मणि भाई, his name is मणि भाई. क्या नाम भूल गया मैं? चार रखे थे तो कंफ्यूज हो गया ठीक है हो गया should I go ahead guys everybody मैंने आपको आज पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता दिया है प्लीज रिमेंबर दिस पूरी स्टोरी बता दी ठीक है धारासन सॉल्ट सत्याग्रह भी बता दिया उसमें सरोजिनी नायडू और इमाम साहब थे along with गांधी जी सन ठीक है Lahore session 1929 presided by Jawaharlal Nehru the demand of Purna Swaraj was made first independence 26th January 1930 okay let's go ahead now and the most important thing जो आपको पता है उस जमाने में 1930 में times of the year person कौन था times of the year person who was the times of the year person अपने जेब से वॉलेट निकालो और जो नोट पे जिसका फोटो है टाइम्स ऑफ पर्सन टाइम ऑफ द ईयर उसका था ठीक है गांधी जी ठीक है मतलब कुछ भी कर लो बापू इज बापू आफ्टर ऑल ठीक है
Nobody can erase anyone's legacy. Either it is Gandhi or Nehru. जितना चाहे उतना कर लो. ठीक है, चलो. Let's go ahead. Hansa New Generation. What is this? It is a first of its kind indigenously developed aircraft trainer. Please mark this word. It is an indigenously developed aircraft trainer. मतलब पायलट को डायरेक्ट उड़ाने दे, रफेल उड़ाने दे उसके पहले फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड. नाम क्या है? हंसा. NG stands for न्यू जनरेशन. किसने बनाया है इसको? द आंसर इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज. ठीक है, दे मेड दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ट्रेनर. CSIR is the largest development organization in India. ठीक है, established in 1959. Only government aerospace research and development laboratory in civil sector. ठीक है, लिख लो. Guys, please remember this is not meant for army, sorry, air force. ठीक है, this is for civilian purpose. अगर आप में से कल कोई उठ के डिसाइड कर ले कि चलो पायलट बनेंगे, तो डायरेक्ट एयरबस और बोइंग उड़ाने से पहले ये दिया जाएगा आपको उड़ाने के लिए. ठीक है, नाम क्या है? हंसा. ठीक है, हंसा इज अ वेरी फेमस नेम. ठीक है, हंसा सुन के मुझको हंसी आ. यस, खिचड़ी. Done. Everybody? Okay. Let's go ahead then. International Women's Day, March 8, celebrated as International Women's Day to celebrate the cultural, political and social economical achievements of women. ठीक है, पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है. The United Nations has celebrated the day on the basis of different themes. इस बार की थीम क्या है? Break the bias. ठीक है, लिख लो. थीम क्या है? Break the bias. Bias, prejudice for any person and anything should be ignored. Not only women, for anything. There should not be any kind of bias and prejudice. ठीक है, but why March 8, guys? You know, you have any idea why March 8? What is so special about March 8? Anybody? Siddharth, any idea why March 8? Then you should search a little. Oh, actually, this is my truck. Get on your knees. Lock your fingers behind your hip. Okay, a little embarrassing. I'm actually a cop too. Keep it as a homework. Next time पूछूंगा why March 8. You're a rookie? ठीक है. Now I know you're lying. Get on your knees. Do it. Dad? ऐसा डे का इंपॉर्टेंस होता है यार, ऐसे ही थोड़ी होता है. Okay, guys, can you tell me the name of the award which is presented by President of India on International Women's Day to women of So you sure you're eminent women? from here? Yeah, of course. I mean, you can't be late for your shift, but I'm not leaving until I see
जिसको नहीं पता ये भी होमवर्क लिखो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बच गए आप लोग. नारी शक्ति पुरस्कार क्या दिया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार. और देता कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, Obviously, this airport jail has me a little off my game. I am क्लियर. too happy here, okay? Don't tell me embarrassing stories about me. It's gonna be hard. There's so many. Really, there's not though. Yeah, my 6th birthday, Easter 2009, the turned out can't you not tell that story? What story? लेट्स गो इट. Hey, Jackson and Lucy. Andrew, Nice to see you. you guys know my son? Yeah, on social media. हाँ, मतलब there is no need to read all the things because there are total 29 women. ठीक है, तो मतलब कितना ही का पढ़े होंगे. ठीक है, but we should know that on this particular day नारी शक्ति पुरस्कार award is given by the president of India. ठीक है, गुजरात में से उषा बेन है वसावा. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से संध्या धार है. बट देयर आर 29 such names. Now you cannot recall all of those. Am I right or wrong? ठीक है, it is a very tedious exercise, so don't do all those things. Answer me this. Okay, Your favorite part about the job? And don't say let's go ahead guys. हो गया. what it is. What you ठीक है, Oh, that's easy. चलो. Please remember that it is given by the president of India. Bas, that is important. Most of what a captain does is paperwork. Because of that, I feel like I've lost touch with being a Sustainable cities India. Very important project of government. It's every single one. Sustainable cities. Please पहले ध्यान क्वेश्चन पे ही ध्यान दो. Sustainable city means we are planning. India is planning to make its cities much more sustainable. Sustainable का मतलब क्या है? That to preserve it for a longer period of time. How it can be done? If it works on clean energy. Clean energy means less carbon emission. Am I right or wrong? But you know my heart. So basically, if the infrastructure is developed in such a way that clean energy is used instead of fossil energy, then we can make cities sustainable. Am I right or wrong? I do. Everything gets a scratch. Okay. So this particular initiative is about that. It is a partnership between NIUA and World Economic Forum. Both of these organizations will work together to make cities sustainable by transiting towards clean energy and learn from the best practices around the world. That if the transportation of Paris is very efficient and based on clean energy, then we can implement the same method in some other city of India. Okay. It is an initiative to create an accept environment for cities to produce decarbonization solutions across transportation, energy, जो हमारे घर पे energy आती है वो, and other environmental factors. ठीक है? It is in line with Prime Minister Modi's view of becoming net zero by 2070, which he made at COP26. I hope you remember Panch Amrut formula of Prime Minister Modi. One of the Panch Amrut is net zero by 2070. Write down. I was just getting my son squared away. Just Any question in this, guys? You forgot I was interning here today, didn't you? I intern at different divisions on Saturday. Write down. high school. My daughter was a senior in high school. Wait, why did you tell Henry's dad to get Are you writing patrol? Captain's orders. Really? Does mom know? Haven't told me yet. I'm happy enough to tell her too. As long as you don't tell her about that C I got in microbiology. You know that's not the way we do things in our house. So that's now. We'll talk about it later. Officer Nolan, let's go. Yes, sir. Let's do our shifts. We'll be late. Oh, he can stay here with me if he wants. That way you two can have lunch together. That's okay, right, Dad? Sure. Great. Yeah. You can tell me all the things my dad doesn't want me to know about his new job. Great. Great. Here, give me some of these. So you didn't get to get her? Neither did you. Do I look like your boo? Okay, guys. First
Let's go ahead. There is a little bit more information about this. पीछे ठीक है. Okay. So just ये दो लाइन पढ़ लो, बाकी कुछ मत करना, ठीक है. It will adapt its toolbox solution and city spring process to decarbonize 5 to 7 cities. ये इंपॉर्टेंट है कि 2 साल में हम कितनी सिटी को डीकार्बोनाइज करेंगे. 5 to 7 इंडियन सिटीज, ठीक है. राइट नाउ What's the procedure? Do I look like a game show host to you? Go find some crime. Make a difference in our community today. ओके गाइस, लिख लिया, आगे चलेंगे. गाइस वो हंसा वाला जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली फ्लाइंग ट्रेनर, ठीक है. वो हमारे कंट्री का सबसे पहला हमने खुद बनाया वैसा फ्लाइंग ट्रेनर है, ठीक है. और उसकी ट्रायल्स कहां पे हुए थे, सक्सेसफुल ट्रायल, प्लीज राइट डाउन, पुंडीचेरी में, ठीक है. ख्याति डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस. 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, ठीक है. अगर आपने 2 बार अच्छे से रिवीजन किया होता है तो थर्ड टाइम रिवीजन इज वेरी सिंपल. मतलब आधे घंटे में हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, लेट्स गो अहेड देन. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अगेन इंपॉर्टेंट. पूरा महीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मार्च 3 का, मार्च 3, मार्च 8, सब बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है. मार्च क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022. सी द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन December 20, 2013 ड्यूरिंग इट्स 68th सेशन. तो अब डिसाइड किया है, 68th सेशन डिसाइडेड to celebrate World Wildlife Day on March 3. Now March 3 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? जैसे कि मैंने आपको पूछा why March 8, वैसे why March 3? Because on this day Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna was adopted. शॉर्ट में इसे CITES कहते हैं. You can write down CITES. Kites. Kites was adopted on March 3rd. So, the United Nations General Assembly in its 68th session decided that 3rd March को हम celebrate करेंगे World Wildlife Day. इस साल की थीम क्या है? Recovering key species for ecosystem restoration. ठीक है, recovering key species for ecosystem restoration. ठीक है, लिख लो. The day will drive debates on imperative need to reserve the fate of the critically endangered species. Means how some species are very very important for environment and ecosystem management. लिख लो.
हो गया dropping all over the place. एवरीबॉडी? Are you asking me or telling me? गाइस आपको सोचना चाहिए that why government Control, this is 715. We are has to launch projects for saving tigers and elephants for lions, ठीक है? बिकॉज आपको पता नहीं होता है, लेकिन अगर टाइगर चले गए अचानक से तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ एनिमल पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ठीक है? पूरी सिस्टम को मैनेज के लिए सम एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? This is embarrassing. I'm a little nervous. Are you happy with your position? Shouldn't I be? It's नाउ लेट अस सी आप लोग कितना समझे हो आज तक का पढ़ना, मेरी इतनी मेहनत जो मैंने की है. You just have to tell me that Belarus is bordered by which country? कितना सिंपल क्वेश्चन है. चलो शुरू हो जाओ. Belarus is bordered by which country? देखे तो सही. Hello there, ma'am. Looks like you were swerving around the street a little bit and noticed you have a broken tail light. Can we talk on the sidewalk? I don't like you standing out there in the street like that. सारी की सारी कंट्रीज चाहिए मुझे. Careful. Nice and easy, nice and slow. Guys, total there are I haven't had a ticket in total 25 there are years. You seem like 5 a nice countries. man. 5 नहीं, हाँ 5 कंट्री है टोटल, ठीक है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. पोलैंड, Have you identified every लाटविया, लिथुएनिया, You sleeping? रशिया, Sir, can you step out of the car? यूक्रेन. Driving. Why do you need to talk to him? सिंपल. Identify everyone. बाल्टिक नेशंस नहीं है, देखो गाइस, डोंट क्रिएट अ ब्लंडर. Thanks. एस्टोनिया कहाँ है? बाल्टिक नेशन में 3 आते हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया. अगर आप बाल्टिक नेशन याद करके जाओगे तो आप गलत कर लोगे, बिकॉज एस्टोनिया इज नॉट शेयरिंग अ बॉर्डर विद बेलारूस, ठीक है? एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट बेलारूस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. It doesn't open out to a sea. Simple question, but a good one. Bosphorus Strait कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? लास्ट टाइम भी कराया था, अभी एक भी आंसर नहीं आ रहा. बात सबका गलत, ऊपर से सिर्फ सिद्धांत का सही आंसर. मैं कितना कितना फोकस करने को बोला था मैंने ये क्वेश्चन पे. भाई बॉस्फोरस सी जो है वो ब्लैक सी को और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करता है, और जो डार्डानेलिस स्ट्रेट है वो सी ऑफ मार्मरा को किससे करता है? सिद्धांत, डार्डानेलिस स्ट्रेट. वेरी गुड. सी ऑफ एजियन से कनेक्ट करता है, ठीक है? और जो कर्व स्ट्रेट है वो क्या करता है? Lawyers, judges, strangers. कर्व स्ट्रेट, सी ऑफ एजो टू It's over. ब्लैक सी. All of these are important points because of Russia and Ukraine, ठीक है? Clear guys? Everybody? ठीक है? मैंने आपको जिब्राल्टर के बारे में भी पढ़ाया था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. वो कौन सी 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? What do we do? Straddle the door. Talk him out of there. Try not to get shot. Yes. Mr. Anthony, I need you to come out. Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. And do you have any idea that Gibraltar वो किसकी टेरिटरी है? जिब्राल्टर किसकी टेरिटरी है? यस अमोल, वेरी गुड.
It is located in Spain, but it is a British territory. ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर आज की डेट में है. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. है बाहर लेकिन है मेरा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. लेट्स गो इट. These are important topics. चलो आगे चलते हैं. हाँ, चलो शुरू हो जाओ. न्यू डेवलपमेंट बैंक. मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें. सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप में कितना आता है आपको. ठीक है, मैं अभी आंसर लिख दूंगा यहाँ, बट प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर. ये सारी चीज पढ़ा चुका हूँ, हर एक चीज. चलो, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, तो मैं बता देता हूँ. द आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय न्यू दिल्ली. ठीक है, इन 2012 at इधर गया 4th समिट. ठीक है, न्यू दिल्ली ने प्रपोज किया है, मतलब इंडिया ने प्रपोज किया था इन 2014 जो 4th समिट थी ब्रिक्स कंट्रीज की. ठीक है, फाइनली चार्टर कब फाइन किया गया? अग्रीमेंट, फोर्टजेला अग्रीमेंट. Fortaleza is located in Brazil in 2014. तब अग्रीमेंट साइन किया गया फॉर ब्रिक्स बैंक. ठीक है, एंड फाइनली द बैंक स्टार्टेड वर्किंग इन 2015. ठीक है, ये कब हुआ? 7th समिट में. ये कब हुआ? 6th समिट में. ठीक है, am I clear guys? BRICS Bank, now it is not known as BRICS Bank, now it is known as New Development Bank. Am I clear? Where is the headquarter? ये भी बताया था, शंघाई. ओके, Which country recently joined? चलो ये तो बता दो यार. लास्ट कंट्री जो ज्वाइन किया था वो इजिप्ट ने किया था. तो ये किसने किया रिसेंटली? There are 3 countries: UAE, Uruguay, and Bangladesh. गाइस, आपकी एग्जाम है में और आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में आंसर देने में गलतियां हो रही थी. सो आई विल अर्ज कि आप लोग ठीक से पढ़ो. ठीक है, इस बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ब्राजील से बिलोंग करते हैं. ठीक है, क्लियर? Should I go ahead, everybody? Please don't keep any doubts. Let's go ahead now. ठीक है? Mahakali River, guys. This is an important topic between India and Nepal relationship. ठीक है? So ध्यान से सुनना. There is a disputed region of Kalapani. Region is disputed between India and Nepal. India के पोजेशन में है ये टेरिटरी right now, along with the disputed territories. There are 3 disputed territories: Kalapani, Lipule, and Lipiadura. All of these 3 are disputed territories between India and Nepal. But at this present moment, all the 3 territories are under the possession of India. So, जो Kalapani region है, it is located on the border between India and Nepal. To be precise, in Uttarakhand. ठीक है?
वहां से एक रिवर निकलती है जिसे हम कहते हैं महाकाली रिवर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज काली रिवर और शारदा रिवर। पता चला, 3 नाम है। नील नितिन मुकेश जैसा है। नील नितिन मुकेश क्या है, एक ही इंसान का नाम है। वैसे यहाँ पे काली, महाकाली और शारदा, ये 3 एक ही रिवर का नाम, ठीक है। नाउ दिस रिवर, ये 3 नाम वाली रिवर है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चलो एक हिंट देता हूं। ये जवानी है दीवानी में जो सबसे पहला सॉन्ग है, वो सॉन्ग का टाइटल नाम क्या है? यार इतना अच्छा हिंट दिया यार, आप तो अभी भी गलत कर रहे हो। हाँ, घाघरा, ठीक है, घाघरा रिवर। यूपी में ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है मेरा जो भी है, वो इस रिवर का नाम है घाघरा रिवर। एंड घाघरा रिवर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो अभी आगे पढ़ते हैं। एक ही मिनट का। देखो भाई, रिसेंटली इंडिया और नेपाल ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। इसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। अग्रीमेंट क्या है? दैट वी विल कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑन महाकाली रिवर। ब्रिज ऑन दिस रिवर। कहां पे? एट धारचूला। इंडिया और नेपाल मिलके बनाएंगे एक ब्रिज इस रिवर पे। कहां पे? एट धारचूला। एंड वी हैव इंपॉर्टेंट treaties. We have important treaties with Nepal on this river. Famous treaty is Mahakali Treaty 1996, ठीक है। Then Sharda Barrage. Then the important, very important Pancheshwar project and Tanakpur Barrage. Okay guys, 4 important things we remember. Bridge on this river at Dharchula, Sharda Barrage, Tanakpur Barrage and Pancheshwar project. Clear? Everybody? ठीक है। एंड एक नेशनल पार्क का नाम आप लिख सकते हो, दुधवा नेशनल पार्क। ये रिवर उस नेशनल पार्क से निकलती है। एंड दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, नियर द बॉर्डर। सो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द पार्क, which is Dudhwa National Park located in UP. Clear? Guys, हो गया। चले आगे। Today we will continue 10 more minutes because 10 minutes wasted before. रहे साथ में, आगे चलेंगे। अब ने पूछा था कि सर पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं पूरा का आशा के लाया हूँ। पूरा नेशनल क्या है वो मैंने फॉर्मेट में यहाँ पे देखो बना के लिखा है। ध्यान से, नेशनल किया गया 2000 मिशन के अंदर क्या है? वी विल मेकिंग ऑफ ग्रीन 24 for a moment of supercomputers. टोटल कितने? 24 फैसिलिटीज। इसको कौन करके ओके वेट,
I am sitting on the same. Wow. अब सुना है? Wow. Haber wasn't kidding. Check his pulse. I am sitting on the same place. What? Hello. Something must be wrong with the internet. Yeah, मैं तो नहीं बैठा हूँ. Let's do this. Still back. Just copy down particular names. ठीक है? Particular news. We can hope that the internet can get stable by that time. See, it is 2015. What are we going to do? 20 facilities. That means 24 regions will be created for the computing, supercomputers. अब सुनाई दे रहा है? ओके. ये किसका मिशन है? It is the mission of Department of Science and Technology. And guys can't मतलब अभी तक इस जगह से मैं लेक्चर ले रहा था, मैं वही से मतलब अब तक ठीक चला. It's not working good. Yes, Priyanshi, you can leave definitely. ठीक है? You can leave. That's not an issue. Okay. Now it's good. Okay. Okay. Let's start then. So, supercomputing mission in 2015. Mission, we are planning to develop 24 facilities for supercomputers connected in the grid. It will be like working together in cohesion. At the back of this particular program, the total huge program is National Knowledge Network. Supercomputer grid के बाजू में मैंने लिखा है National Knowledge Network. ठीक है? It is the mission of Department of Science and Technology along with the Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है? Which agency will implement this particular program? The answer is CDAC, Center for Development of Advanced Computing, Pune, along with IISC, Bangalore. पता चला? Mission is to develop 24 facilities with the total power of 64 petaflops.
64 petaflop, very important. Masala remains the same. It will help us in Atmanirbhar Bharat, MI, Make in India, multidisciplinary, national and global importance. Guys, supercomputer can be used for anything from weather prediction to uh, life-threatening disease की medicines, treatments, anything. Computers are used for anything. There is nothing जहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर्स को यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. So under this, a supercomputer called Param Ganga, which is high performance computer. HPC stands high performance computer. It is established at IIT Roorkee and its capacity is 1.66 petaflops. Am I clear? 1.66 petaflop. परम गंगा नाम है. कहां पे बनाएंगे? आईआईटी रुड़की. Everybody, let's go ahead then. ठीक है. Millen exercise, very important. It is a multilateral exercise organized by India. It is a biennial exercise. हर 2 साल में एक बार करते हैं. 2020 से पहले तक हम कहां पे करते थे? अंडमान एंड निकोबार कमांड पे. बट फॉर द फर्स्ट टाइम in 2022 is held in Visakhapatnam under the Eastern Naval Command. This is the 11th edition and the first time it is held in Visakhapatnam. Theme क्या है? Canadian cohesion collaboration. This thing signal to China that India is capable of pulling out such a massive drill in the Indo-Pacific region. ठीक है? Understood? Why this is important? Because for the first time, US Navy exercise called Milan. You should also know and surprised that even Russia was also a participant in this particular exercise. ठीक है? This year it was a much larger and complex exercise. And do you know आपको हाँ बोलना है because मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ. सागर stands for what? Guys? सागर का फुल फॉर्म क्या है? मैं पढ़ा. Security and growth for in all regions. Very good, good job. Security and growth for all in region. Another doctrine is a doctrine of India. ठीक है? दो एक हार्बर में और एक सी पेज में. तो guys, the way I prepare notes, you have to prepare your notes in the same way. Just writing down the important point. The first exercise was held in 1995 with nations in. Okay. This is a technique for you how to prepare your notes. धर्म गार्डियन में पढ़ा चुका हूँ शैलराज 2 हफ्ते पहले. इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज इन
कर्नाटका। आज एक और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे Gosh, इसके बाद। I was in middle school. गाइस रिटर्न, चले आगे। Took him a few months to get back on his feet. Okay. To feel like that again. So, I'm assuming. P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट है जो पेट्रोल किया जाता है। दिस एयरक्राफ्ट P-8I, it is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft। का भी काम करता है और सबमरीन के साथ लड़ने में भी it relies। It is a variant of P-8A Poseidon aircraft developed by Boeing company। बोइंग कंपनी कहाँ की? ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग अ वेरिएशन ऑफ यूएस नेवीज P-8A Poseidon aircraft and we are using the variation called 8I. I stands for India, you can understand. The maximum speed is 907 km per hour and its operating range is 1200 nautical miles। ठीक है। Why it is important? Indian Navy become the first international customer for P-8। ठीक है। Where this aircraft are stationed, it is stationed in Arakom in Tamil Nadu and also in Gujarat। ठीक है, लिख लो। Don't ignore this topics. I you remember the question 2 years ago. Same type of question. From which country, from which company, what are the features, where it will be stationed। ठीक है। रशिया ने जो the largest aircraft in Ukraine, just know the name, no details necessary for that। Okay, couple question can be asked like this: which was the largest plane that was Russia during the invasion of Ukraine? So you should know the name, nothing else, nothing more than that। Okay, clear guys, should I go ahead? Everybody, लिख लिया? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने कितने मंगाए थे? 8 मंगाए थे। देन वी बाय 4 मोर, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है। तो जो 12th वाला था वो रिसेंटली इंडिया को मिला है, इसके लिए मैं पढ़ा रहा था आपको ये टॉपिक। पहले 8 मंगाए हमने, फिर 4 और मंगाए, रिसेंटली हमको दी। ठीक है, बोइंग वालों ने। उसके बाद एडिशनल 6 की भी हमें परमिशन मिली है। ठीक है, एडिशनल 6 एंड दिस 6 विल कम विद कॉमकासा with the US। COMCASA stands for the Agreement on Communication Compatibility Security Agreement। Now please write down the homework। India has signed which 4 defense agreement with US? आपको उसके नाम मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताने। It is a homework for you guys that India has signed which defense agreements with USA। COMCASA is one such agreement। ठीक है। Please read this news and then we will go ahead।
ये सारे टॉपिक्स आपको ऋषित एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हिजब बैन के बारे में क्या पूछ लेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में चल रहा है। हिजब के बारे में क्या हो सकता है, आर्टिकल 21 वायलेट करता है, इट वायलेट पर्सन्स राइट टू वेयर व्हाट इज दिस, whatever you want to wear basically, freedom of choice, article 21 violates, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ड्रेस पहन लो, सलवार कमीज पहन लो, साड़ी पहन लो, लेकिन हिजब नहीं पहन सकते हमारे यहाँ पे, ठीक है। आई विश अमेरिकन ऐसा कोई लॉ ला दे यूएसए में, देख सिर्फ स्कर्ट पहनना चलेगा अमेरिका, वो हमारा कल्चर है। फिर देखता हूँ, फिर वी विल सी व्हाट इज द रिएक्शन देयर, ठीक है। Am I right or wrong? अगर यूएस कह दे that you have to follow our culture from tomorrow, आप हमारे देश में रह रहे हो, हमारे यहाँ पे कमाते हो, कल से स्कर्ट पहनो, कल से कंपलसरी टाई पहनो, ठीक है। Then we will start crying. What about our fundamental rights? ठीक है। बट इंडिया में ये सब चलता है। चलो आगे चले गाइस। Let's go. Let's go. Eastern Bridge 6. Eastern Bridge 6 मतलब Eastern Bridge exercise का 6th edition. First thing to know is that it is an exercise between Indian Air Force and Royal Air Force of Oman. ठीक है? It is a bilateral exercise which is conducted at जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो ईस्टर्न ब्रिज 5th एक्सरसाइज कहां पे हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन मासीरा ओमान, एंड इन मासीरा ओमान इन द प्रीवियस एक्सरसाइज हेल्ड लास्ट ईयर, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट MiG 29 participated in an exercise out of India, ठीक है। लिख लो, Oman is a very dear partner for India. Our armed forces, all the 3 services, they conduct exercise on regular intervals, ठीक है। And please remember that India has access to Lukam port. It is a very important port located near Gulf of Oman, जो इंडिया को एक्सेस करने की परमिशन दी है द गवर्नमेंट ऑफ ओमान, ठीक है। अगर आप में से if somebody has time after examination, then you should read that what was the first satyagraha of Gandhiji in South Africa, and try to relate that particular thing with the hijab controversy. So आपको पता चलेगा the difference between a good man and a great man, ठीक है। फिर कभी पढ़ना after your examination, the first 2 सत्याग्रह of महात्मा गांधी in South Africa, ठीक है। Okay guys, done with this, everybody. अरे यार मैंने कहा ना पढ़ लेना, अगर मैं ही बता दूंगा तो कैसे चलेगा, आप समझ लो यार। आपको पता है ना अपने ऑनलाइन है यार, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब सेफ नहीं है यार, ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लिए ये यहीं पर रखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एंड वी आर ऑलरेडी काफी स्ट्रेच आज, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू कंपनसेट फॉर द टाइम दैट वाज लॉस्ट, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टडी वेल। हाँ नेक्स्ट संडे यार, संडे हो या मंडे, अपने को सब चलता है, ठीक है।